Assalamu alaikum, you're watching the Haider Rifaat Show and I'm your host Haider Rifaat. In today's exclusive episode, I've invited one of the finest actresses that we have in Pakistan today. It's none other than Sarwat Gilani. Thank you so much Sarwat for taking out time for this interview. मैंने सबसे पहले शुरुआत करनी थी जो recently लाहौर के motorway पे जो gang rape का जो case हुआ है. Everybody, it's making rounds on social media and rightfully so. So as a mother, as a wife, as a human being, as a woman, frankly, what do you make of this? It's just unbelievable, Haider, and it needs to stop now. I mean, एक औरत कोई इमरजेंसी स्टेट में अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती, ना वो रोड पे सेफ है, ना छोटी बच्चियां जिनका रेप होता है घरों में, ना वो सेफ हैं, ना औरतें जो कब्र में जा चुकी हैं वो तक सेफ नहीं है. सो औरत सेफ कहाँ है? औरत कहीं भी सेफ नहीं है. इस सोसाइटी में तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है. So as a woman, I feel like I used to be very strong-headed and very passionate about women's rights and all of that, but it's scary. It's actually scary. I mean, Allah हिम्मत देने वाला है और कल भी हम लोग प्रेस क्लब के बाहर खड़े हो रहे हैं कुछ दिनों में और इसके बारे में बात कर रहे हैं. लेकिन as a mother, I feel, as a mother of two boys, I feel it is my responsibility to talk about bad touch and good touch and insecurity and security and how they should treat women. और औरतों का उनको बचपन से किस तरह सिखाया जाए उनको कि अच्छी तरह औरत से किस तरह बात करनी है या बिहेव करना है या उसके अराउंड रहना है. तो ये तो हमारी फॉल्ट है हैदर, क्योंकि हमने कभी अपने घरों में ये बातें नहीं की, क्योंकि हमने कभी स्कूल में ऐसी कोई करिकुलम नहीं रखा. Sorry? For the better. I think we're too shy to talk about these things, or I think इसी practice को change करना जरूरी है, starting from our own home. Yes, absolutely. I mean, West में आप देखते हैं कि स्टडीज हैं जो करिकुलम है उसमें ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं. तो हमारे वहाँ क्यों नहीं सिखाई जाती? हम उनका मजाक उड़ाते थे और आज हम खुद मजाक बन के रह गए. So these, I mean, things need to change. वो shame और private parts, ओहो बात नहीं करनी, ओहो कोई ऐसी बात नहीं करनी, ओ कोई ऐसा सवाल नहीं करना, डांट पड़ जाएगी. वो सारे जमाने चले गए. वो जमाने चले गए. हम सड़कों पे साइकिलिंग किया करते थे. आज के जमाने में कोई बच्चा बाहर नहीं दिखता है. क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वो सिक्योर ही नहीं है. तो हमें इतना वो कहते हैं ना कि हम खामोश होके जो बैठ गए हैं कौम, इतनी बंद जबान बंद कान वाली कौम बन चुके हैं कि अब जब तक हमारे साथ या अल्लाह ना करे हमारे बैकयार्ड में ये नहीं होगा तब तक हम उठ के क्या नहीं जाएंगे. तो हमें इस चीज का नहीं इंतजार करना चाहिए. वी नीड टू गेट आउट, वी नीड टू मेक अ नॉइज and we need the government to change this. Enough is enough. I agree with you. There's so much dark web content. You know about dark web? Dark web is there, out there. And dark web की सबसे ज्यादा बड़ा शिकार कौन है? बच्चे हैं. बच्चे जो इन छोटे गांव में रहते हैं जहां ना पुलिस आपकी मदद करती है, ना पुलिस आपकी FIR दर्ज करती है, ना पुलिस आपके साथ कोई भी कंपैशन दिखाती है. तो वहां पे इंसान क्या करे? घरों में बंद रह जाएं. मगर वहां पे भी तो सेफ नहीं है. I remember कुछ दिनों पहले I'm part of this group which is called child abuse and we talk about all these cases. और वहां पे एक चाचा ने अपनी 4 नीसेस को, जिनमें से एक स्पेशल थी और एक जो सबसे छोटी थी वो 3 साल की थी, उस तक को नहीं छोड़ा. सो बच्चे कहीं सेफ नहीं है हमारे. हम कहाँ जाएं? इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि हमें ये इतनी भयानक चीजें देखनी पड़ रही हैं अपने आप को जगाने के लिए. Very sad. Moving on, Sarwat, COVID-19 is another challenge that we all are facing collectively as a world. तो आप मुझे ये बताएं, during this time period, आप अपना time किस तरह utilize कर रही हैं creatively during this pandemic?
Heather, I did a lot of art classes for kids, and it started with just me posting a few pictures of my time with my children and creating art. We do that every day, regardless of COVID or no COVID. 4 to 7 is my time with them. तो जब मैंने एक आर्ट क्लास की पिक्चर लगाई तो लोगों ने माओ ने स्पेशली वो बहुत अप्रिशिएट किया. Or as a mother, I also felt that I needed to help other mothers because they are going through the same thing. कोविड में कोई खास इंसान खास नहीं था और कोई आम इंसान आम नहीं था. सब एक जैसे थे और सब एक ही किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस कर रहे थे. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं और माओ को हेल्प करूं और मुझे रिक्वेस्ट आई कि आप इसके आर्ट प्रोसेस को वीडियो में बना के हमें दिखाएं. सो इट स्टार्टेड विद वन वीडियो and the response was so overwhelming, and I felt like there is such a huge need of this kind of craft and this kind of time during COVID, this kind of solution to stay sane. I mean, I remember जब शुरू में हमें नहीं समझ आती थी क्या करें, तो पूरा दिन हमें कुछ पता ही नहीं होता था कि क्या करना है हमें. पूरा दिन कैसे गुजारना है. So I think it gave me and other mothers and other kids a purpose to do something creative daily. And the response was overwhelming, Heather, from like Gujranwala to Sialkot to Australia to Perth to Scotland to, you know, like Norway and everywhere. I got a response from every mother, every household. And it was amazing. It was so rewarding. And I felt like it helped me to stay sane mentally and to stay healthy physically. And I think we need to practice a lot of that. हम यहाँ mental health पे बिल्कुल बात नहीं करते. हमें लगता है कोई therapist के पास जाते हैं तो वो शायद पागल है. और हम depression, sorry, stigma बहुत ज़्यादा attached है ना. बिल्कुल. So mental health के ऊपर जब कोई बात नहीं होती तो कम से कम आप गूगल ही कर सकते हैं कि mental health के लिए आपको क्या चीजें करनी चाहिए. So I felt that art was one thing that helps you calm down, helps you breathe, helps you relax, helps you concentrate on colors, and obviously puts you in a better mood. So that was what I did in COVID. और मैंने 4 महीने एक art teacher बन के, although I used to get really tired and I would tell my husband कि बस अब मेरे ideas भी खत्म हो गए और मेरी हिम्मत भी खत्म हो गई है. But मैं वो हिम्मत हार नहीं सकती थी because मेरे ऊपर बहुत सारी responsibility थी इतने बच्चों को और इतनी माओं को entertain करने की. So I kept on doing it for up until like 4-5 months. I started in May, March. No, when did it start? March, right? March. COVID started in March, right? So I think after 23rd March, we started this, and just like about a month and a half ago, I stopped doing those classes because फिर मेरी promotional campaigns शुरू हो गई थी कुछ. Yeah, so it had been a blessing in disguise for many reasons, but yes, it was very traumatizing initially. और बहुत like बड़े इतने upset थे और इतने confused थे और इतने डरे हुए थे. तो बच्चे तो sponge हैं, बच्चे sponges की तरह होते हैं, and they would take all that negative energy of the adults. And so I thought that it's very important to be positive and just give out positive vibes. That's a great initiative, Sarwat. अच्छा, मैंने आपसे ये भी बात करनी थी. COVID-19 ने आपको personally कैसे change किया? आपका view on life and overall? You know, I think I became closer to God, and I think I started practicing my religion more than what I used to. And I started seeing inside, and I started going inside, and you know, introspection मैंने बहुत की, क्योंकि हमारी इतनी busy lives में time ही नहीं मिलता कुछ करने के लिए. So this was a great time where there was ample time and you really didn't know what to do. So there are a lot of books that I read, a lot of talks that TED Talk की मैं शौकीन हूँ, तो मैं TED Talk बहुत सुनती हूँ. और इस तरह करके सुकून मिला अपने आप में जाके और अपने इंट्रोस्पेक्शन करके, अपने आप को करेक्ट करके at many points, अपने आप को दुरुस्त करना, अपने आप को बताना कि नहीं
ये thought process सही नहीं है, ये ज़्यादा बेहतर thought process है. And I think हमें ये हर अरसे में, हर थोड़े-थोड़े अरसे में करना चाहिए. हमें अपने आप को देखना चाहिए बजाय कि हम दूसरों को देखें कि उनकी fault है जो भी हमारी ज़िंदगी में हुआ. So I think this was, this was one of the best things that happened to me. I started interested. Sarwat, हमारी जो entertainment industry, it also took a major hit during these past few months. Shootings, आपको पता ही है, they came to a temporary halt. तो आपको क्या लगता है कि how do you see this entertainment industry progressing in a post-pandemic scenario? हम किस तरह से recover कर सकते हैं जो हमें loss हुआ है in चंद months, few months past और अभी भी जो चल रहा है period? देखिए, I think being professional and being hardworking and being all of that is going to come into action now when people know that they have to work harder. Although हमारी इंडस्ट्री में लोगों को लगता है कि बड़ी जी तैयार होके आ जाते हैं और अच्छे लग रहे होते हैं और पार्टी चल रही होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है. हम बहुत मेहनत से काम करते हैं, हम 6-6 घंटे खड़े रहते हैं एक शॉट के लिए और बहुत मुश्किल रहा है. यस, प्रोड्यूसर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए. बट आई थिंक कि अपने आप को और अपने स्टैंडर्ड्स को हाई करना, अपने प्रोफेशनलिज्म को और बेहतर करना, आई थिंक दैट्स द ओनली सोल्यूशन. बिकॉज अगर हम उसी फ्रीक्वेंसी पे पोस्ट कोविड भी काम करना शुरू करें और सोचें कि ये हमारे लिए अच्छा होगा तो ये अच्छा नहीं होगा, हम उसी रट में फंसे रहेंगे. सो आई थिंक वी नीड टू बेटर आवर ओन स्टैंडर्ड्स to make better content and to have content in order to have an industry to survive in it. Sarwat, recently you made a lot of waves on social media with regard to, or overall mainstream media can there be, with regard to your acclaimed web series Churails, right? So aap mujhe bataye, how does that series it taps into women empowerment? Kis tarah se, kyunki obviously it's led by 3 powerful women actresses who are playing these characters. 4, yes, sorry about that. So how does it feel to, be able to see these 4 women in the limelight or leading the story? So how does it tap into that women empowerment dynamic? Haider, when Asim sent me the script, I was just blown away because इतनी सच्चाई से कोई नहीं लिखता, सब बहुत डर डर के लिखते हैं और एक आईना उन्होंने दिखाया जो हमारी सोसाइटी असल में है. और आई थिंक इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग होने की वजह ही वो ऑनेस्टी है with which he wrote that script, with which he highlighted all those problems that we face as women in our society. And not even just in our society, even in the West, the same problems are faced by women. So, ऐसी कहानियां जिसमें सुपरफिशियल तरीके से नहीं बात की जाए या एक फैंटेसी की तरह बात नहीं की जाए, बल्कि एक रियलिटी को लेके उसके अंदर सच्चाई डाल के उससे बगैर डरे वो बात की जाए. I think that was Churails. That is what Churails was about. And जो आज हम केसेस देखते हैं अपने सामने, वो सारे केसेस Churails में डिस्कस हो चुके हैं. Churails में उनके बारे में बताया गया है कि ये क्यों होते हैं, इसका तो हम सबको पता है, लेकिन ये एग्जिस्ट करते हैं, हमने ये दिखाया. And Churails is not just about women empowerment. It is also about noticing those cracks in our society जो हम ever so conveniently अपने ड्रामों में कवर अप करते हैं या अपनी फिल्मों में कवर अप करते हैं या इतने खुल सब्जेक्ट्स पे बात नहीं कर सकते. तो जब चुड़ैल्स की बात हुई और जब हमने चुड़ैल्स को देखा, हमने देखा कि नॉर्मली ड्रामों में हमेशा कोई मर्द ही रेस्क्यू करता है औरत को, कोई आदमी ही आके शादी करता है तो औरत की जिंदगी सफल होती है. जबकि चुड़ैल्स में ये बिल्कुल नहीं था. चुड़ैल्स में it is women who are taking charge of their own lives. And I think reality में भी ऐसा ही होना चाहिए. I think reality में भी कोई ऐसी सिक्योरिटी कम्युनिटी या कमिटी या एक ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए जो इस तरह के औरत के हुकूक के ऊपर बात करे और उनके ऊपर एक्शंस ले. And so I felt that Churails was a beautiful reflection of an ugly society
that we are living in. Sarwat, the culture of web series काफी ज़्यादा in है और obviously Churails was also a web series. तो क्या आपको लगता है going into the future पाकिस्तान की जो industry है it will be shifting from television or the big screen so to say, big screen तो खैर नहीं वो तो big screen है लेकिन from television drama specifically to web. Do you think that's going to happen very soon? You know, Haider, worldwide, globally, television and cinema has become obsolete. And in the near future, you will see it becoming more obsolete. Because now people don't have the time, like the youth and many other people. Obviously, older generation ke liye television is a good medium to keep themselves entertained. But globally, phenomenon is changing. And it is only web. इंसान अपने मोबाइल पॉकेट में वो सारी फिल्में और वेब सीरीज देखना चाहता है. उस कन्वीनियंस जो है वो बहुत जरूरी हो चुकी है. तो आई थिंक कि पाकिस्तान अभी भी बहुत लेट है हम कि हमारे पास कोई वेब पोर्टल नहीं है. अब हर जगह वेब पोर्टल्स बन चुके हैं. सो नॉट टू से दैट पाकिस्तान शुड स्टॉप प्रोड्यूसिंग ड्रामास और फिल्म्स, बट वी शुड also start thinking about a web portal, and not just one web portal but a couple of web portals. And all these telecom businesses have started doing something or the other with their little campaigns, and they have these films, short films in their mobile packages and stuff, network packages. So I mean the future is web. So it's really time that we move on to web if we want to compete with people globally, with countries and content globally. Great. सरवत, एजिज्म के बारे में बात करनी थी मैंने आपसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, क्योंकि देखें बाहर के मुल्कों में जहाँ पे हॉलीवुड हो गया, बॉलीवुड हो गया, मोस्टली हॉलीवुड में a lot of female actors who are well above the age of 70 or 60, they get to lead stories. और वो कोई इस तरह की स्टोरी नहीं होती कि एक हीरोइन टाइप स्टोरी हो. Those are very uniquely driven stories. तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ये शायद हमारा mindset बना हुआ है कि okay, you need to have this pretty face in order to lead a story, especially for a woman. लेकिन जो male counterparts हैं उनको ये challenge face नहीं करने को मिलता. So as a woman of a particular age, आपको क्या लगता है कि ageism is a concern in Lollywood, और क्या इसका solution क्या होना चाहिए? What is the middle ground that we need to find? Yes, Haider, absolutely. I think हमारी इंडस्ट्री में 30 के बाद कोई औरत की कहानी नहीं है. And Nimra Bucha puts it very well, you know. She said that ऐसे लगता है कि हमारी कंट्री में 30 साल जब आप क्रॉस करते हैं तो एलियंस आपको ले जाते हैं, क्योंकि उन लड़कियों की उस एज ब्रैकेट के प्रॉब्लम्स की, उनकी कहानियों की कोई बात नहीं करता. वो बात कॉलेज गोइंग लड़कियों से शुरू होके कॉलेज गोइंग लड़कों तक खत्म हो जाती है. एक ड्रामे का प्रेमिस ये होता है कि 26 एपिसोड में ये देखा जाएगा कि लड़के लड़की की शादी होती है या नहीं. So a lot needs to change. Our stories need to change. We have some really amazing women who are way beyond 25 or 35 of age, and they are doing amazing work for the society. लेकिन हमने कभी नहीं सुना ड्रामों में या रीना खान जैसी एज की और लीडिंग रोल्स कर सकती थी. And I think web brings that difference. Web content globally, you will see all Hollywood actors turning to web. You will see all Bollywood actors turning to web. And so you will eventually see all Lollywood and Pakistani entertainment actors turning to web. Because ड्रामे में हमारे लिए कुछ नहीं लिखा जाता. सिर्फ कॉलेज से शुरू होके कॉलेज तक कहानी होती है. और ये एक बहुत ही एक कहते हैं कि इग्नोरेंट सोसाइटी की एग्जाम्पल है. सिर्फ उन्हीं इश्यूज को एड्रेस करना जानते हैं या चाहते हैं जिनकी टीआरपी आती है और जिनकी सोल्यूशन एक फॉर्मूला में उनके पास बंधी हुई है. जो नई कहानियां हैं, जो प्रोग्रेसिव कहानियां हैं, या जो चैलेंजिंग कहानियां हैं, या चैलेंजिंग स्टोरीज हैं, या चैलेंजिंग औरतों की कहानियां हैं,
उन पे बात नहीं होती बिकॉज उन पे मेहनत बहुत लगती है। और मेहनत क्या होती है कि एक दो दिमागों को या तीन दिमागों को बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है और उसका टाइम नहीं है लोगों के पास। तो क्यों वो नई चीजें एक्सपेरिमेंट करें जहां पुरानी चीजें, जहां औरत को जलाया जाता है, औरत को मारा जाता है, ससुराल में जहेज की बातें होती हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बातें होती हैं, ये सारा कंटेंट टीआरपीस देता है। So at the end of the day, we are responsible for what is happening in our society. And we should be ashamed of ourselves that that is the only kind of storytelling and elevation of the society that we can do. लेकिन सरवत, आपको क्या नहीं लगता कि ये भी एक एक्सक्यूज है from our filmmakers या producers या overall जो कहते हैं कि audience को they blame it on the audience basically कि they want to watch these stories. लेकिन Yes. interact with people, they want to watch quality stuff, quality stories, stories that are driven by unique narratives. So don't you think यहाँ पे एक थोड़ा सा ये loophole है कहीं? Absolutely. You see, जब हम चुड़ैल्स बना रहे थे तो हमें लगा कि हमें बहुत बैकलैश मिलेगा और लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे और उनको समझ आएगी ये कहानी या नहीं। लेकिन हैदर, आई कैन नॉट टेल यू, 90% of the people were like, thank God कि कोई ऐसी कहानी आई है, thank God हम सास बहू के प्रॉब्लम से, लव अफेयर और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से निकले हैं। और ये हमें रिस्पॉन्स देखने के बाद पता चला कि ये टीआरपीस की बात नहीं है, ये लोगों का, प्रोड्यूसर्स का या चैनल्स का कहना बिल्कुल गलत है कि लोग ये चाहते हैं। चुड़ैल्स की सक्सेस की वजह ही यही है और उसकी स्टोरी ही यही है that people are ready for this change. People are sick and tired of these mundane, obsolete stories that do not elevate or educate the society. In fact, वो और demean कर रही है society को और worse से worse mindset पे लेके जा रही है। सरबत, एक और इश्यू था जिसके बारे में बात करनी थी, that is the culture of references in Pakistan's entertainment industry. Not many people talk about it. लेकिन क्योंकि I'm also a new artist, I've also been acting for a while now, started last year. तो ये मैंने काफी चीज notice की that there are many people, nepotism or references is a completely different thing. यहाँ पे ये होता है कि there are many powerful people who back certain artists to land constructive roles, और जो नया artist जो कि बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा होता है, he gets sidelined very easily, or she gets sidelined very easily. तो क्या आपको लगता है this practice needs to change for the better? What is your overall view on this? I mean, Heather, I've been part of this industry over 18 years. That's like almost 2 decades. And yes, you're right, ऐसा होता है। रेफरेंस या बहुत टाइम लगता है अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए। आई मीन, आई यूज्ड टू टेल पीपल दैट मैं तो कछुआ हूँ। खरगोश और कछुए की रेस की कहानियां आपने सुनी होगी। एंड slowly and steadily you have to prove each day to these producers, to these directors that you are worth it. And at the end of the day, you know, it's only the viewers who give you the reward. It is not any producer or not any director or no clan or no group in this entertainment society that give you a reward or an award. आपको reward आपकी मेहनत से मिलता है। I used to think that मुझे कोई नहीं awards देता। 18 साल में मुझे एक award नहीं मिला है। तो क्या हुआ उसका? उससे ये हुआ कि मैंने अपने craft पे मेहनत की, और जब मैंने अपने craft पे मेहनत, मुझे इन लोगों की जरूरत नहीं महसूस हुई। मुझे, मेरे लिए मेरा रब और मेरा क्राफ्ट और मेरे व्यूअर्स जो मेरे फैंस हैं, जो मुझे देखते हैं, जो मेरा इंतजार करते हैं, वो जरूरी होते हैं। So yes, it needs to change. It needs to change so much so that we need to get new people on board. We need to give them a fair chance. We need to stop having these, you know, groups in the entertainment society. And I think वो time आ रहा है, Heather, where the newer generation, the who are coming in, will make this happen and will make a difference. But हाँ, पुराने लोगों से आप जरा कम ही expect कर सकते हैं कि वो अपना mindset change करेंगे, because उनके लिए ये mindset सदियों से चला आ रहा है, you know, unfortunately.
बिल्कुल। और सरवत ये भी बात है कि जो नए लॉट ऑफ फिल्म डायरेक्टर्स हैं और जो प्रोड्यूसर्स हैं हु आर यंग, हु आर कमिंग अप विद फ्रेश आइडियाज, उनको भी पार्ट नहीं उस तरह से मिलता टू ब्रेक इनटू दिस इंडस्ट्री, क्योंकि इट्स बीइंग हाईजैक्ड बाय अ फ्यू पीपल, आई वोंट से ऑल, लेकिन कुछ लोग जो कि दे डोंट वांट दोस टाइप ऑफ स्टोरीज टू फ्लरिश। तो ये भी एक मैंने इशू देखा है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो कि फिल्म मेकर्स हैं, देयर प्रोड्यूसर्स, दे वांट टू मेक इट बिग इन द इंडस्ट्री, बट देन अगेन वही बात, क्वालिटी स्टोरी टेलिंग, nobody wants to buy that particular idea. अभी मैंने एक फिल्म की थी जिसका which is based on illegal human trafficking or illegal organ trading जो होती है. I played a trafficking victim. उसको cinemas में इजाजत नहीं दी गई. Nobody wanted to buy that क्योंकि they thought कि content जो है उसके अंदर that is very explicit, या तो maybe the audience won't respond to it very well. So I think ये भी एक issue है. It's not just the actors who are suffering, it's also the producers जो नए हैं, who are new faces. They have also had to put up with these social injustices maybe when it comes to the entertainment industry, शायद. देखिए हैदर, the solution to all of this globally has been web content. वेब जब तक हमारे पाकिस्तान में वेब कंटेंट नहीं बनेगा, मतलब वेब का एक पोर्टल नहीं बनेगा, कंटेंट तो बहुत है हमारे पास, बट जब तक हमारे पाकिस्तान में वेब का पोर्टल नहीं बनेगा तब तक ये इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स और जो सोलो खड़े हुए हैं विदाउट एनी क्लैन बैकिंग, विदाउट एनी ग्रुप बैकिंग, तब तक अनफॉर्चुनेटली उनका काम नहीं निकल सकता. एंड आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू. There is a web portal that is coming up and it's called Rinstra, and very soon it will be up and you can submit all your work there. You can get in touch with them, and they are open to all these kind of and non-commercial ideas. So उसमें सब कुछ है, उसमें commercial content भी है, उसमें non-commercial content भी है. And I think it's about time that our amazing producers and directors, the younger generation, they need a platform like that. So although this will take a little while, but it's coming. So hold on, okay? Just hold on there, and it's coming, and it will change a lot of things in our entertainment industry. Yes. इंशाल्लाह फॉर द बेटर. अच्छा, मैंने सरवत आपसे ये भी बात पूछनी थी, सिचुएशन कराची की किस तरह की है, क्योंकि ऑब्वियसली वी नो कि फ्लड्स बहुत ज्यादा हैं एंड इट ब्रोक द 90 years record as well. तो what is the situation like over there? Unfortunately 90 साल का तो हमने रिकॉर्ड ब्रेक किया है हैदर, लेकिन हमने करप्शन का 70 साल का रिकॉर्ड नहीं ब्रेक किया, ठीक है ना. सो उस करप्शन, वो सिस्टम, मतलब वो दीमक की तरह हमें खा रहा है, और हम अपने आप को बहुत फख्र से कहते रहे पिछले सालों की कौम है, हम बड़े रिजिलियंट हैं और हम किसी भी दुख और दर्द को अपने सर आंखों पे बढ़ा. दैट्स आवर फॉल्ट. हम रिजिलियंट नहीं हैं, हम ढीठ हैं और हम जुगाड़ू कौम हैं. हम जुगाड़ निकालते हैं. अगर पूरी गली में किसी की नहीं बत्ती आती तो हम अपने घर के लिए कुंडा लगा लेते हैं. So we've become complacent, and that is not a label that everybody should wear on their heads फखर के साथ. हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा. I remember अभी कुछ दिनों पहले ये सब DHA के बुरे हाल, बदतरीन हाल से हम गुजरे. नया नाजमाबाद डूबा हुआ है, ऐसे जैसे समंदर हो, वो कोई समंदर के अंदर बनाया था. इंटीरियर सिंध, मतलब you name it, every part of Pakistan is ruined because of corruption. Because जितने पैसे आप देते हैं या उनको मिलते हैं या हमारे खून पसीने की कमाई से वो टैक्स लेते हैं, उसका वो सिर्फ कुछ नहीं करते सिवाय वो अपनी पॉकेट. सो अब जब तक हम नहीं खुद निकल के शोर मचाएंगे, ढंडोरा पीटेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला. अभी कुछ दिनों पहले DHA के कुछ residents, about 30-40 residents went to the office, in front of DHA office, and they said कि हम टैक्स देते हैं, हमारे बेसिक नेसेसिटीज नहीं है, हमारी पानी की लाइनों में पानी नहीं है, और आप वही पानी DHA के टैंकर से बेचते हैं. तो ये तो एक बहुत ही बड़ा माफिया है जिसको सामने आने की बहुत जरूरत है. और जब हमने हैदर, उन्होंने FIR कटवाई उन लोगों पे,
जिन्होंने उनके ऑफिस के सामने जाके पीसफुल प्रोटेस्ट किया। जब हमें ये पता चला कि उन्होंने ये किया तो हमारा दिल बहुत दुखा और हमें बहुत अफसोस हुआ। और आई किड यू नॉट, मेरे घर में शायद 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ होगा। लेकिन क्योंकि मैंने देखा है कि मेरी गली में, मेरे नेबरहुड में, मैंने वीडियोस देखी कराची की, और मैंने देखा कि गरीब लोग किस तरह अपने सरों पे अपना बोरिया बिस्तर बांध के उनके गांव बह गए और वो जा रहे हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है और कोई जिम्मेदारी उठाने वाला नहीं है। सालों से, जब से मैं बड़ी हो रही हूँ, मैं यही देख रही हूँ कि वो उसको पॉइंट करता है, वो उसको पॉइंट करता है। आई मीन सो मच सो कि एक ब्रिज गिर गया कुछ सालों पहले, कोई फ्लाईओवर्स टूटे थे जहां पे बहुत नुकसान हुआ जानी, बसें गिरी, गाड़ियों पे गिरी, और वहां पे कोई इसकी ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं। और वो उसका क्या हुआ, उसके बारे में कुछ दिन लोगों ने बात की, 4 लोगों ने आवाज उठाई और वो बंद हो गई और उसका कुछ नहीं हो सका। सो द टाइम इज नाउ हैदर, जिंदगी बहुत मुख्तलिफ हो गई है। अब मलीर, कुरंगी और नॉर्थ नाजमाबाद में बैठने वाले शख्स के भी पास एक आवाज है और वो आवाज मीडिया है, वो आवाज वेब है, और उसको वो हिम्मत देता है और अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपनी आवाज को उठा सके और वो आवाज मिलियंस ऑफ लोगों तक, नॉट जस्ट पाकिस्तान बट ग्लोबली, वो सुनाई दे सकती है। So I think we need to stop being complacent and we need to stop saying कि हम बहुत resilient हैं, और हमें अपनी ढिठाई से, अपने डर से, अपने खौफ से निकलना चाहिए, क्योंकि हम अपना हक मांग रहे हैं। और अगर अपना हक मांगते हुए आपको लोग कहें कि आप गलत काम कर रहे हैं, तो वो उनका हिसाब किताब है, हमें कोई नहीं डरा सकता। FIR काटी, हम और पहुंच गए वहां, हम और ज्यादा लोग पहुंच गए ये कहने के लिए कि आपने कैसे FIR काटी, आपने कैसे हमें हमारा हक नहीं दिया। वो FIR पिटिशन के थ्रू वापस ले ली गई। तो अगर 4 या 10 लोग मिलके ये कर सकते हैं, तो इमेजिन करें कि अगर हम इन सारी इनजस्टिस और इल लॉफुल चीजों के ऊपर अगर हम 4 नहीं बल्कि 4 करोड़ लोग खड़े हों, तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा कि वो इस सिस्टम को, इस करप्शन को खत्म करे? आएगा। सो वी नीड टू स्टॉप बीइंग कंप्लेसेंट, वी नीड टू स्टॉप थिंकिंग कि हमारे इंस्टाग्राम पे या करने से दुनिया चेंज हो जाएगी और सिस्टम को कोई फर्क पड़ेगा। उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप सब मिलके, हम सब मिलके बाहर नहीं आएंगे, अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, तो हम ऐसे ही दुनिया में रहते रहेंगे, ऐसी सोसाइटी, ऐसी गन में रहते रहेंगे। I think on field जाके अपनी protest करना, that is something completely different than going on social media और एक uproar create करना. So I think we need to go back to our traditional ways. अच्छा सरवत, आप मुझे ये बताएं, what is next for you? आपके from Churails, what new projects are underway? Nothing. Nothing for now. Nothing, Haider. Asim Abbasi has left us in so much awe that we cannot look at any other script and be in an awe again. So, so I think Churails के बाद मेरा तो कोई हाल नहीं है अब। मुझे कोई काम नहीं समझ आ रहा और मुझे कोई स्क्रिप्ट नहीं समझ आ रही, क्योंकि मैं थक गई हूँ हैदर। मैं 18 साल तक मैंने वही चीजें, वही ड्रामे, वही कहानियां, वही इश्यूज, वही प्री कंसीव्ड नोशंस ऑफ हाउ हमारी सोसाइटी क्या होनी चाहिए, सास बहू रिलेशनशिप क्या होनी चाहिए। मैं काफी थक गई हूँ। अब मैं सिर्फ वेब पे कंसंट्रेट करना चाहती हूँ और आई थिंक आई एम गोना वेट इट आउट। मैं वैसी साल में एक प्रोजेक्ट करती थी, तो अब आई थिंक मैं 2 साल में एक प्रोजेक्ट कर लूंगी। But I think I am more into kids and education and science and art and robotics and all of those. So very soon you'll be hearing me coming up with a very good plan for education and kids and schools. That's great. That's where I'm concentrating right now. Now, speaking of kids, you're obviously a mother to 2 beautiful children. How do you manage to raise them in the public eye? Is it a challenge for you? क्योंकि काफी ऐसा होता है कि celebrities जो होते हैं, they openly just post their kids photos on social media और वो उनका अपना prerogative होता है। लेकिन काफी ऐसे लोग भी होते हैं
they want privacy. They don't want their children to be exposed to this, paparazzi environment, ya to social media ki environment. So what is your take as a mother on this issue? I was very much like that before COVID. I mean, I would have arguments with my husband if he would put pictures of my kids. Because I'm very old school और मुझे बहुत वो होता है कि बच्चों को नजर लगती है, उनकी तबीयतें खराब होती हैं and all that. And I am a very, very private person in real life. I am a very shy person. I'm a very private person. So for me to publicly display my kids was very uncomfortable. But because I had to do art with kids during quarantine, so there was a lot of exposure of my kids during those classes. But because it was for a good cause and it was doing more, less harm than other projects, I gave in. I gave in for a good cause to use my kids and to help other kids. But at the same time, मैं आज भी जब कोविड खत्म हो गया है तो मैं फिर वापस बैक टू माय ओरिजिनल सेल्फ चली गई हूँ, जहां मैं फिर अपने बच्चों की तस्वीरें नहीं लगाती. और आई थिंक एक privacy होनी बहुत जरूरी है, and for the kids to know that this is not the age for them to be so open and so at display for people to comment. Because यहाँ हमारे वहाँ लोग नहीं सोचते comment करने से पहले कि एक बच्चा है, वो किसी का बच्चा है, वो छोटा है, वो क्या सोचता है, उसके दिमाग में क्या चलता है. लोगों के ओपिनियंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और वो इनसेंसिटिव भी होते हैं. सो मैंने तो बड़ी फड्डे किए हैं लोगों से, और आई जस्ट वांट टू रिफ्रेन फ्रॉम दैट. एंड आई फील दैट बच्चों को आफ्टर अ सर्टेन टाइम एक्सपोज करना चाहिए सोशल मीडिया से. और इवन नाउ आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट मदर because I come from a family who, my father was in the army, my mother was a principal, so we came from a very strict background. And padhai jo hai wo, that was the utmost given utmost importance. And so even now we do virtual school, and if in a day my kid doesn't get an excellent or a good job, I feel really angry at myself. So I challenge, and I take that responsibility that they need to be ahead of the class. I mean, they're 3 and 5. And I don't put the pressure on them, but I put the pressure on myself. And how can you do that? I think मेरे लिए ये होता है कि मैं virtual class करके फौरन अपनी worksheets कराती हूँ बच्चों से, जो मेरा curriculum मैंने खुद बनाया है अपने बच्चों के लिए. It doesn't follow any system. It follows a universal system. And I think कि अगर आप अपने बच्चों को पहले 8 साल या 10 साल बिल्कुल अच्छा फोकस और बिल्कुल अच्छी ट्रेनिंग और कंसंट्रेशन के साथ उनके ऊपर मेहनत करते हैं, so then the rest of their lives you don't have to really run after them. They have a mindset and a very responsible mindset of their own. So मैं 9 बजे जो हम बैठते हैं स्कूल पे, तो 12 बजे हम उठते हैं, जबकि स्कूल खत्म हो चुका होता है 10:30 बजे. But I continue worksheets, and I continue creative learning processes till like 1 in the afternoon. Then they have lunch, then we do some uchal kood, then in the evening it's art and activities and something creative that they have to make. So you have to keep challenging them and challenging yourself. A lot of times mothers give up. Mothers are like, बस हम तंग आ गए हैं, हम थक गए हैं, हमें किटी पार्टी पे जाना है, हमें लंच पे जाना है, हमें डिनर पे जाना है, हमें ब्रेकफास्ट पे जाना है, हमें ये चाय पे जाना है, वो. तो आई थिंक कि अगर माएँ बहुत मेहनत करती हैं अपने बच्चों पे, नो डाउट, लेकिन अगर वो एकेडमिकली एक खुद प्लान बनाएं और खुद ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहें, बिकॉज लाइक I am so involved in so many things, so I need a very strict schedule for my kids. Whether it's a weekend or a weekday or COVID or a holiday or regular school days, my kids go to sleep at 8:39. So that the mother needs to do.
माओ को जरा सख्त दिल होना पड़ता है. Bad cop माओ को बनना पड़ता है. Good cops बाबाज होते हैं. So yeah, I'm okay with being a bad cop, but I know that this is the betterment for my children, and I don't mind being called the strict principal की बच्ची जो अपने बच्चों को भी उसी तरह रेस कर रही है. So yeah. सरवत, मैंने आपसे इसकी भी टेक लेनी थी कि जो housekeepers या तो overall maids जो होती हैं, they are taking care of their children. Are you for or against this practice? क्योंकि बाज़ों का ये भी होता है, you don't know what is happening behind doors. You can't keep the check on them, the children overall. So now you're regulating everything. You're managing your work. You're also taking care of your family. तो ये जो culture है इस चीज का भी to hire domestic help to look after your children. Do you think ये भी सही है या गलत है? As a mother, what is your take? I think there's no harm in keeping house help as long as you treat them well, as long as you take care of their medical issues, as long as you take care of their domestic issues, whether it's financial or sentimental. I think to take care of somebody, to give them a good livelihood, to help them earn a better living, it's all a good thing. But it's very important कि हम ना भूले कि वो भी किसी की बेटी है या वो भी किसी की बहन है या उसकी भी कोई उम्मीद है, उसकी जिंदगी है, उसका भी कोई फ्री टाइम है. So I am very easygoing with my house help. At the same time, they know that I'm very stern. So I may not be very, I'm also very friendly. Like I sit and sometimes I'm hungry या वो खा रही होती हैं खाना अपनी किचन में, तो मैं उनकी रोटी तोड़ती हूँ, उन्हीं की प्लेट से खाना उठा के मैं खा लेती हूँ. और उनकी अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो मैं उनको हेल्प करती हूँ. And I think there's no harm in having these, एक एज भी बहुत जरूरी है. बिल्कुल छोटी बच्चियां रखना अपने घर में जो उनकी एज से बहुत कम है अभी खेलने के, पढ़ने के, मैं वो बिल्कुल बहुत ज्यादा हद तक अवॉइड करती हूँ. मेरे पास जो हाउस हेल्प है, they are adults, they need to work somewhere to earn a living. Also for me, for a maid to have a mobile phone is a big no-no, because I want girls who are invested in themselves and in the job that they're doing, and there is no external factor that's disturbing them. So no, I feel if you treat them well, if you take care of them. I remember जब ये बच्चियां नहीं आई थी मेरे पास, तो वो जमीन पे बैठ के खाना खा रही थी. And I went into the kitchen. I said, ये क्या कर रही हो? And they thought कि वो खाना खा रही हैं इसलिए मैं upset हूँ. I bought a table and 2 chairs for them, and I said, never again you're sitting down and you're eating it. You have to eat properly. Chammat se khao, kaate se khao. So elevate them, help them become better human beings, and there's no harm in it. You have to treat them well, not like knocker, not like slaves. Yeah, exactly. They're humans too. At the end of the day, मेरी mother भी जो है, she also always keeps them on the dining table. Dining table पे खाओ, plates में खाओ, everything. So you need to have empathy for them as well. अच्छा, Sarwat, very lastly, 2 questions. एक तो मुझे बताया कि husband Fahad की most admirable quality क्या है? और number 2, how do you want to be remembered? Oh, wow, those are nice questions. I think what I love about Fahad is that he's always the rock that I'm standing on. I know for a fact that कुछ भी हो जाए, मेरे साथ, मेरी बैकिंग पे मेरा हस्बैंड खड़ा हुआ है. एक ये चीज है, और एक और चीज ये है कि वो मुझे अपने आप को, like he helps me, कैसे कहेंगे, he helped me realize that I was an individual that was capable of doing anything, and he helped me fall in love with myself again, and he appreciates me every day. He tells me I'm beautiful every day, चाहे मैं मासी की भी हालत में होंगी, but the compassion that he has for me or his mother or his sisters is what I love about him. He's very compassionate, very respectful, एक साथ सहारा पिलर की तरह खड़ा होता है. और I think हर आदमी को
हर बेटे को, हर बाप को एक कंप्लीट मैन होने का मकसद यही होता है कि वो रोज कोशिश करे और वो रोज एफर्ट करे अपने अच्छा बेटा होने की, अच्छा भाई होने की, अच्छा मियाँ होने की, अच्छा इंडिविजुअल, अच्छा सोसाइटी में एक बंदा होने की। आई थिंक वो रोज एफर्ट करता है और मुझे उससे इसीलिए प्यार है क्योंकि वो रोज एफर्ट करता है इन सारी चीजों के लिए और वो दिखता भी है। सो आई थिंक एक कंप्लीट मैन वही है जो रोज एफर्ट करे अपनी इनसिक्योरिटीज को ओवरकम करने की, लोगों को अप्रिशिएट करने की और अपने साथ अपनी खवातीन को भी एलिवेट करने की। आई थिंक इनसिक्योर लोग होते हैं वो जो अपने से बढ़ती हुई खवातीन को या अपने से आगे जाती हुई खवातीन से इनसिक्योर होते हैं और उनको घरों में बैठ के बंद करके उनको दरबों में रखना चाहते हैं और चाहे वो खुद बाहर जाके कुछ भी करते रहें। सो दैट इज वन how I want to be remembered. I want to be remembered as a humanitarian. I want to do something for the society. I feel I have a huge responsibility as a person who has a voice in this society to be able to give back to this society. I'm the ambassador for Special Olympics because as a child, I was taken by my mother to Darul Sukoon. Every Eid, every birthday we would spend there. We would make gifts for these kids who we didn't even know. So I think compassion जो है वो आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है और अगर आपके अंदर compassion है तो आप अच्छा ह्यूमन बीइंग किसी भी कैपेसिटी में बन के कोई भी काम इतना अच्छा कर सकते हैं कि आपको दुनिया याद करे. So I think I want to do lots for kids. I think there is a lot of as a mother I feel that कि बच्चों के लिए पाकिस्तान में बहुत कम opportunities हैं. बहुत कम लोग सोचते हैं बच्चों के बारे में और हम और बाकी फजूल चीजों के बारे में बहुत सोचते हैं. So I feel I want to be remembered as somebody who did something for the kids of Pakistan. Great. On that note, thank you so much, Sarwat. It was a pleasure having you on my show and talking to you about constructive topics. That is all for now. Stay tuned for more on my official YouTube channel and Facebook page. Until then, take care. Allah Hafiz.